My question pertains to finding a balance between a demanding career and spirituality. So, for someone considering a career in fields like investment banking, where work hours exceed 100 hours a week, you naturally only have about 4 to 5 hours of sleep left. And for someone that's initiated, you're obliged to meditate for an additional 2.5 hours, which means you're effectively left with only about 2 to 3 hours of sleep. So, how is that sustainable, and how do you sort of strike a balance between your career and spirituality? It's not sustainable, because if you're going to work like that, you're going to burn yourself out. Now, if you sort of keep a balance and work, say, 8-9 hours, you'll be able to perform much better and give much more than if you work, say, long hours and perform less. You see, so once you reach your optimum level, then you're only sort of giving it time without giving anything else in return. So that's why, beta, balance is very essential in life. If you keep a balance, everything will be more productive and positive. The moment you cross that limit, your efficiency is going to start going down. Perfect. Thank you, Babaji. Babaji, I feel such a discord. I feel uncomfortable because you have been so kind to me. And I know it is your grace or you have helped me through this path, but I am unable to do my share. And so I don't know how to bridge this gap, Babaji. You send the child to school and the child says, I don't want to study. What will you say? Sit at home? Won't you explain to the child what is good for him, what is bad for him, and how he will go forward? What is the difference between us and the lower creatures? The Lord has given us that sense of discrimination, which means we should have the ability to think for ourselves. What is good and what is bad? And if we aren't able to see for ourselves, then who else can help us? When you know what is the right thing to do, when you know what is it that's going to take you forward, and if you don't do it, like they say, none are more blind than those who will not see. The only time I'm straight is when I'm going to see you or when I'm at the dera. That's the only time I'm straight. Otherwise, That's again creating a dependency. You see, you have to graduate from the physical to the spiritual. We are creating a dependency. And when you create a dependency, then it's time for him to leave. Raswami Sadhguru, I had requested my wife in the past to ask a question on behalf, and she had had a wonderful opportunity to ask. The question was at that time if love could be begged for, or is it exclusively a gift from him? The answer was it's exclusively a gift from him. Can you please share some wisdom on it? Because the Bible says God is love and love is God. You see, so it's a question of experience. Love is not something that anybody can give you. As a relationship is created, a bonding takes place, and then we start feeling that emotion that we call love. Now, real love is beyond the physical, because in the physical there's always a calculation. So, we have to use the physical as a platform to access the spiritual. When we feel love, we always expect something in return. There's a certain calculation. I mean, the nearest you can have to the purity of love is the love a mother has for her child. But even there's a little expectation that when I grow old, he will look after me or she will look after me, right? So, but the love we are seeking, there is no calculation. And that is only when you reach the spiritual realm, where you love for the sake of loving, not for what it will do to you or what it will give you. A lover can only love the beloved when the beloved
bestow that love. Forgive my ignorance. Who is the lover? Who is the beloved? Because the lover can only love when the beloved gives that love. Can you clap with one hand? No. It takes two hands to clap. Yes. So this relationship is always the lover becomes the beloved and the beloved becomes the lover. It's a two-way street. Thank you, Sadhguru. क्वेश्चन है कि हमारे जो संसारिक रिश्ते हैं माँ और बेटे का जैसे है, दोनों ने अगर नाम दान की बख्शीश हुई है और सारा सब कुछ हुक्म में किया है, तो क्या जब दुनिया छोड़ते हैं अलग अलग टाइम पे छोड़ते हैं, आगे भी कुछ रिश्ता रहता है या वहीं खत्म हो जाता है? ये रिश्ते जिस्मानी हैं बेटा. जब जिस्म ही नहीं रहा तो रिश्ता भी खत्म हो गया बेटा. अब जिसने भी पहले ये इस जिस्म को छोड़ा तो जिस्म तो अग्नि के सपुर्द हो जाएगा ना. और जब जिस्म ही नहीं रहा तो कौन सा रिश्ता? अगर आप ये कहें कि जब आत्मा जिस्म से निकल के ऊपर जाएगी तो उसको मालूम है कि उसका पति या उसका बेटा या जो भी है, आत्मा को नहीं एहसास. Master, you are from Anami. You are extraordinary, but you are always play acting ordinary. What you did with the Muslim saint was extraordinary. With the Christian Pope, it was too. My father was initiated in 1971. I'm standing here today and begging for initiation. You see, basically for us, because we are limited, we see everything in a limited perspective. It's not that on the actual human level we are any different from each other. It's just the awareness. So somebody can have increased awareness and some are more sort of wrapped up by Maya illusion. So that's the purpose of meditation, is to unwrap and create that awareness. Most of us think that we have to do something, we have to go somewhere. It's actually just a realization. Thank you. In my pursuit of gratitude, I just wish to improve myself, be a better person. And I think self-growth is much related to spirituality. I strive to do better each day. So I would like to hear your thoughts on a few of these subjects. The first one is comfort zone. Right now, I'm so happy and peaceful and content that I cling to anything that makes me feel safe. Spaces, people, everything. But growth begins at the end of comfort zone. So at what point, how does one balance the peace of growth with the necessity of growth? That's my first subject. But life can't stand still. You either go forward or you'll go backward. There's nothing called, standing still in life or having that pause button in your life. Nothing. So it's better to take action rather than be in that inertia where nothing is happening. So always think positively and move forward. I see. The next one is about self-love. For some reason, despite of me trying to work very hard on myself, there's still lots of self-doubt. I don't know where it comes from. So All of us have doubts, beta. All of us. We've all doubted ourselves whether we will be able to fulfill, we will be able to do it or not. It's something very natural. I mean, if that doubt wasn't there, you would be overconfident. It's the doubt which makes you work harder. I see. So it's part of everybody's life. If anybody was to say that he knows 100% what's going to happen or he's been 100% successful, he doesn't know what he's talking about.
Yes. I guess also part of the self doubt comes from how much to tolerate other people. Like, I want to be good, so I try to be as compassionate. No, it's not tolerance. I would say it's your own peace of mind. Somebody saying something, it only affects me if I listen to the person. If I choose to ignore what he is saying, it's basically left with him. I see. It only should affect me if I listen. If I choose to ignore it, it won't affect me. So why do we choose to listen to every negative thing? I see. Just ignore them. ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਈਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਹੂਗਾ? ठीक है बाबा जी। राधा स्वामी बाबा जी। बाबा जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में 2 पीढ़ियों से बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं और जो उनका झुकाव जो है वो देवी देवताओं की तरफ भी है। जब आप सब कुछ यहाँ पे ऐसा है कि हम आपसे जुड़ सकते हैं और सचखंड का रास्ता अपना सकते हैं, तो क्या हमें इसे मानने की जरूरत है? बेटा इंसान कमज़ोर है। वो जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत होता है, तो इस कमज़ोरी में इंसान सब कुछ ही करता है कि चलो कहीं तो सहारा मिलेगा। सो इसलिए बेटा मिलेगा तो अंदर से मिलेगा, बाहर जितनी मर्जी कोशिश कर लें। जब तक हम ध्यान को अंतर्मुख नहीं करेंगे, ये तो मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं। राधा स्वामी जी, बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कभी तो हम बोलते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा, बट कभी है ना ऐसे बोलते हैं कि अगर हम मेहनत करें, खूब मेहनत करें, तो हम किस्मत को बदल के और उस चीज़ को पा सकते हैं। तो हमें क्या मानना चाहिए? नहीं बेटा, ये बोलने का लहजा है। किस्मत नहीं बदली जा सकती, क्योंकि किस्मत तो आपके कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। कर्म तो हो गए, वो तो बदले नहीं जा सकते, तो किस्मत कहाँ से बदल लेंगे? मगर इंसान मेहनत करेगा तभी तो कदर होगी उस चीज की। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਦੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਾ ਹੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। बेटा प्रेम कोई दिता थोड़ी जाता हैगा, ये तो एक अवस्था हैगी है। जे आपां अपना असल जिहड़ी सेवा है उहनूं पूरा करांगे, अपने आप साडे अंदरों वो भावना जागृत होऊगी। ये मंगण नाल नहीं मिलनी, ये मिलूगी जदों आपां अपनी जिंदगी नूं सवार के अपनी असल सेवा भजन बंदगी दी करांगे। ਉਹਦੇ एवज विच ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।
बाबा जी जैसे नामधन की बख्शिश हो और प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें उस टाइम पे मतलब हमें कैसे किस टाइम पे कितने टाइम तक हमें नाम सिमरन करना चाहिए या कैसे मतलब उस टाइम पे? बेटा भजन के आसन में उस वक्त आखिरी महीनों में नहीं बैठना चाहिए, मगर सिमरन तो आप बैठ के कर ही सकती हैं। बाबा जी अगर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में मतलब जैसे हम बैठेंगे तो कितनी देर बैठे? नहीं, आप लेट के कर लो अच्छा लेट के कि कर बस एक आसन अपनाओ, बार बार हिलना जुलना ना रहे। बाबा जब आप बाणी लेते हो एक धुन सुनकर मन समझाइए बाबा जी जिन्हों ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ नहीं बेटा, हुण बच्चा कवे जी मैं MA और BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮਨ ਲਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੱਚੂਗਾ। बाबा जी मेरी कि आपकी फोटो को मोबाइल स्क्रीन पर लगाना सही है या नहीं बेटा ये तो दुनिया का दिखावा है। जिसको प्यार है उसको बाहर से ये तस्वीरों का सहारा लेने का तो कोई मकसद ही नहीं है। जब तक अंदर दिल में प्यार नहीं है तो ये क्या फर्क पड़ता है। बाबा जी ऐ हम लगता है नहीं, मेरे को ये बताओ, हम लगा तो लेते हैं मगर कितनी बार देखते हैं। ध्यान तो जिसका मैसेज आया है या व्हाट्सएप उन चीज़ों के ऊपर है। हाँ जी धन्यवाद बाबा जी बाबा जी मुझे ये पूछना था कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई गाइड होता है जिससे हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो हमें गाइड करता है। तो अगर वो गाइड हमारे से दूर चला जाए तो हम किससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो लाइफ में तो? बेटा छोटी उम्र में गाइडेंस चाहिए होती है, और छोटी उम्र में माँ बाप हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं कि हम अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर खुद उन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करें। अब सारी उम्र अगर दूसरों से पूछ कर चलेंगे तो फिर कैसी आज़ादी रह गई बेटा। वो तो डिपेंडेंसी हो गई ना। डिस्कशन के लिए तो कोई चाहिए होता ना, किससे डिस्कस करें हम अपनी बात को? बेटा हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक की अपनी सोच है, उसका जो ज़िंदगी का अनुभव है वो आपको सूट करे ना करे। भाभी जी आपको सच्ची में सब कुछ पता होता है क्या? बेटा जिस दिन किसी को ये एहसास हो गया ना कि दूसरे को सब कुछ मालूम है, फिर कोई आगे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। भाभी जी क्या ये दुनिया ये सिस्टम हमेशा चलेगा? क्योंकि मेरे को मेरे को भी यहाँ पे बहुत दर्द होता है और मेरे को पता है कि मोस्ट लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं। बेटा खुशी तो आपके हाथ में है। हमने अपना सारा कुछ दुनिया के ऊपर क्यों छोड़ा हुआ है। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल करेगा उसको हर एक चीज में से खुशी मिलेगी, और जो मन के अधीन होके मन की चाकरी में लगा हुआ है तो मन तो फिर अपना नाच नचाएगा ना। क्यों दुख होना चाहिए। मालिक ने जब सृष्टि को बनाया, मालिक तो कोई चीज बुरा नहीं बना सकता। अब ये हमारा देखने का लहजा है, हम उसे अच्छा देखें हम उसे बुरा देखें। थैंक यू बाबा जी।